हेलो पिला माने आजिर क्लास सहित चैनल को पुणी थरे समस्त को स्वागत। आज आम जेटी 2023 इंग्लिश पेडागोजी टॉप 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा। जदि आपण आम चैनल को प्रथम थर पई विजिट करिसंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करंतु, जहा द्वारा आपण आम चैनल रो समस्त नुआ नुआ क्लास रो नोटिफिकेशन सहजरे पाई परिबे। जेटी 2023 नोट एवं मॉक टेस्ट पाइबा आम व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम चैनल रे शीघ्र जॉइन हुंतु। तेबे आसंतु आरंभ करिबा आजर क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन, द राइट सीक्वेंस फॉर लर्निंग द फोर मैक्रो स्किल्स इज। द राइट सीक्वेंस फॉर लर्निंग द फोर मैक्रो स्किल्स इज। भाषा शिक्षण रो चारि गोटी दक्षतार बा चारि गोटी कौशलर सठिक क्रम केउटी केउटी पिला माने राइट आंसर कौन है? ऑप्शन सी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ऑप्शन सी होची भाषा शिक्षण रो सठिक क्रम, अर्थात श्रवण, कथन, पठन व लिखन। श्रवण, कथन, पठन व लिखन यही चारोटी सठिक क्रम अटे। भाषा शिक्षण रो दक्षता गुड़िकर सठिक क्रम अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ओडिशा English is being taught as dash language. In Odisha, English is being taught as dash language. Which language? Which language? Option B, second language. ओडिशा रे इंग्रजी को द्वितीय भाषा रूपे ग्रहण करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समराइजिंग, नोट मेकिंग एंड रिपोर्टिंग आर एसोसिएटेड विथ dash skill. Summarizing, note making and reporting are associated with dash skill. Which skill? Writing skill. Writing skill. Option B. Option B. Right answer. Next question. Skimming is a sub-skill of reading. Skimming is a sub-skill of reading. Next question. The right of children to free and compulsory education was made in the year. The right of children to free and compulsory education was made in the year. मागणा व बाध्यतामूलक शिक्षा, मागणा व बाध्यतामूलक शिक्षा अधिकार आईन केबे प्रस्तुत करागला? केबे पिला माने 2009 मसीहा रे। ऑप्शन सी राइट आंसर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, by education I mean an all-round drawing out of the best in the child and the main body, mind and spirit. This was told by. अर्थात शिक्षा कहले मु बुझे मानव बा शिशुर शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक विकास। यह किए कहिथिले? किए कहिथिले पिला माने? महात्मा गांधी। ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what step does a teacher have to undertake to facilitate reading habit of a learner? What step does a teacher have to undertake to facilitate reading habit of a learner? Option A, reading newspaper. Option B, library reading. Option C, picture and map reading. Option D, all the above. तो पिला माने राइट आंसर कौन? राइट आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑल द above. नेक्स्ट क्वेश्चन, होलिस्टिक evaluation of learners is done by. होलिस्टिक evaluation of learners is done by. ऑप्शन ए, यूनिट एंड evaluation. ऑप्शन बी, टर्म एंड evaluation. ऑप्शन सी, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव evaluation. ऑप्शन डी, मंथ एंड evaluation. तो पिला माने राइट आंसर कौन? राइट आंसर ऑप्शन सी, कंटिन्यूअस एंड comprehensive evaluation. Next question, which of the following countries mother tongue is not English? Which of the following countries mother tongue is not English? Option A, Russia. Option B, United Kingdom. Option C, Australia. Option D, Canada. तो राइट आंसर कौन पिला माने? राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, रूसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन द लर्नर्स आर। तो पिला माने राइट आंसर कौन है? राइट आंसर ऑप्शन
C. Interactive. Next question. Some noise in a language class indicates dash. Some noise in a language class indicates dash. Option A. Indiscipline of the learners. Option B. Teacher's inability to control the class. Option C. Constructive activities with the learners engaged in language activities. Option D. Incompetency of the teacher. तो पिला माने राइट आंसर कौन है वो? राइट आंसर ऑप्शन सी, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज विथ द लर्नर्स engaged in language activities. Next question. For learning a language perfectly and scientifically, the first two macro skills that a learner should come across in the process are. For learning a language perfectly and scientifically, the first two macro skills that a learners should come across in the process are. Option A. Reading and writing. Option B. Listening and speaking. Option C. Listening and reading. Option D. Speaking and writing. तो राइट आंसर कौन है पिला माने? राइट आंसर ऑप्शन बी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. लिसनिंग एंड स्पीकिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. द terms like simile and metaphor are associated with. The terms like simile and metaphor are associated with. Option A. Prose. Option B. Poetry. Option C. Story. Option D. Grammar. राइट आंसर कौन है पिला माने? राइट आंसर ऑप्शन बी, poetry. Option B, poetry. Poetry is the right answer. Next question. If Ramsa is related with OMSM, then SSA is related with dash. Right answer कौन पिला माने? Right answer option C, OPEPA, not OSSA. OPEPA is the right answer. OPEPA, OPEPA, option C. Next question. Students need to brainstorm ideas, organize them, draft, edit and revise their work. It is a process which reflects. Option A. Reading skills. Option B. Writing skills. Option C. Listening skills. Option D. Speaking skills. तो राइट आंसर कौन है पिला माने? राइट आंसर ऑप्शन बी, राइटिंग स्किल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच इज द रिसेप्टिव स्किल्स ऑफ ए लैंग्वेज? व्हिच इज द रिसेप्टिव स्किल ऑफ ए लैंग्वेज? ऑप्शन ए. लिसनिंग एंड रीडिंग. ऑप्शन बी. अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग. ऑप्शन सी. स्पीकिंग एंड राइटिंग. ऑप्शन डी. अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग. तो राइट आंसर कौन है पिला माने? राइट आंसर है ऑप्शन ए, लिसनिंग एंड रीडिंग इज द रिसेप्टिव स्किल ऑफ ए लैंग्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन शुड ए टीचर डिजाइन एक्टिविटीज फॉर ए लेसन? व्हेन शुड ए टीचर डिजाइन एक्टिविटीज फॉर ए लेसन? ऑप्शन ए. आफ्टर सिलेक्टिंग मेथड. ऑप्शन बी. आफ्टर formulation of instructional objectives. Option C. After reading the lessons. Option D. After collecting TLM. तो राइट आंसर कौन पिला माने? राइट आंसर ऑप्शन बी, आफ्टर फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिटन इन एक्शन verbs because they can be dash. The instructional objectives are written in action verbs because they can be dash. Option A. Tested. Option B. Read and clarity. Option C. Understood properly. Option D. Conceptualized. तो राइट आंसर कौन पिला माने? राइट आंसर ऑप्शन ए, टेस्टेड. टेस्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Which among the following is not an assessment tool? Which among the following is not an assessment tool? Option A, observation. Option B, checklist. Option C, rating scale. Option D, self assessment. The right answer कौन पिला माने? Right answer option D, self assessment. Next question. When young learners seem to lose interest in a lesson, the teacher should. When young learners seem to lose interest in a lesson, the teacher should. Option A, allow them to go out and play. Option B, ask them to sleep for a while. Option C, tell them a story. Option D, ask them to sit quietly for some time. तो राइट आंसर कौन पिला माने? राइट आंसर ऑप्शन सी, टेल देम ए स्टोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which theory of language learning has found knowledge of internal process crucial to understanding of learners? Which theory of language learning has found knowledge of internal process crucial to the understanding of learners? Option A, the cognitive theory. Option B, stimulus response theory. Option C, operant conditioning theory. Option D, the classical conditioning theory. The right answer कौन पिला माने? Right answer option A, the cognitive theory. The cognitive theory. Next question. Learning of English in India as a second language has been so important and inevitable since dash. Learning of English in India as a second language has been so important and inevitable since dash. Option A, English is a foreign language. Option B, people speaking English are highly honored. Option C, India is a multilingual country. Option D, English is a linked and international language. The right answer कौन पिला माने? Right answer option D, English is a linked and international language. Next question. The alphabetic method, the phonic method, the word method and the sentence method are associated with dash. Option A, listening. Option B, speaking. Option C, reading. Option D, writing. The right answer कौन पिला माने? Right answer option C, reading. Reading. Next question. Writing is dash representation of speech. Writing is dash representation of speech. Option A, morphological. Option B, linguistical. Option C, graphical. Option D, phonetical. तो राइट आंसर कौन पिला माने? राइट आंसर ऑप्शन सी, graphical. Writing is a graphical representation of speech. The next question कौन अच्छे पिला माने? In order to assess the all-round development of a learner, the teacher has to take the help of. In order to assess the all-round development of a learner, the teacher has to take the help of. Option A, unit and evaluation. Option B, term and evaluation. Option C, continuous and comprehensive evaluation. Option D, month and evaluation. The right answer कौन पिला माने? Right answer option C, continuous and comprehensive evaluation. पिला माने आजिर क्लास टी हेल्पफुल थिले लाइक करी सांग मानकु मध्य शेयर करंतु. आगामी क्लास पर्यंत विदाय दियंतु. रहुछि धन्यवाद.